one thing, politics creates strange debate fellows. And Karan, I want to ask you, do you think it is because of the kind of statements that Mr. Shashi Tharoor has made in the recent past, which did not seem to be matching with the statements that have come from the High Command or even the party president on a number of issues, be it about, what he said about the Russia-Ukraine crisis, and then how he also said that circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025, when the Congress leaders started talking about 1971, started suddenly remembering Indira Gandhi after the ceasefire understanding was announced. Is that the reason why he is being sidelined? Is internal rift the reason? So, Hina, this entire thing right here exposes what is wrong with the Congress party today, and it has been wrong for a very long time. It's only just grown up exponentially now. Any person of merit who has a grasp of issues, who understands, the Congress wants to sideline them. Can you imagine Shashi Tharoor, as Sanju ji said, was the undersecretary at the United Nations of which department? Communication and Public Information from 2001 to 2006. This is precisely what is required right now to communicate to the world, and the Congress party chooses to distance themselves from him. So this shows their pettiness. This shows that anyone who has ever been talented. We remember with what happened with Dr. B.R. Ambedkar. In his resignation letter on 10th of October 1959, he mentions this, that I have been sidelined on foreign policy issues. Somebody who was as brilliant as Dr. Ambedkar who found himself in a corner in this party. What did they do with P.V. Narasimha Rao? Narasimha Rao stood above party line and chose Atal Bihari Vajpayee. But how did they deal with P.V. Narasimha Rao? Pretty much erased his memories, pretty much erased his legacy. That is the Congress party for you. That is why today the Congress party is struggling. They are sitting in the opposition. They are reduced to a pale shadow of themselves. But Varun ji ko ye baat nahi samajh aati. Varun ji aaj bhi jhagda karte hain Tehseen ji se. Tehseen ji is a right well-wisher of the Congress party. He at least wishes for people, the right people to come up. He needs to introspect. Why has Jyotiraditya Scindia left this party? Why has Himanta Biswa Sarma left this party? Why has Milind Deora left this party? These were people who commanded respect across the aisle, across party lines. But they have all distanced themselves from the Congress party, and they continue to repeat that Congress party clips your wings the moment they see you are talented. And I want to ask one question to Varun Purohit ji. Why hasn't Rahul Gandhi come forward? Why hasn't the Congress party said, Rahul Gandhi, who keeps touring abroad, the leader of the opposition, why does he not take the mantle of going abroad and articulating position for India? उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ली राहुल गांधी ने ये वाली एक अपॉर्चुनिटी? वरुण पुरोहित जी, जवाब दीजिए। और साथ में एक मेरा सवाल ये भी है कि क्या पार्टी लाइन इतनी जरूरी है कि नेशनल लाइन को डेंट किया जा सकता है? देखिए ना जी, आपका प्रश्न का पहले उत्तर देता हूं। पार्टी लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि किरण रिजिजू ने पार्टी अध्यक्ष से, एलओपी से बात करी। उनको अगर पसंद नहीं आया, जैसे संजू वर्मा जी कह रहे किरण रिजिजू जी को डिड नॉट लाइक, अरे उनको उनकी पसंद नापसंद क्या करती है एक मंत्री की? वो वापस बात कर सकते थे कि मुझे ये, और ये जो चारों नाम है, अगर दिल्ली अभी जो डेलीगेशन पूरा बनेगा, अगर ये चारों नाम आ जाएंगे तो संजू वर्मा फिर क्या बोलेंगी? तो वो उनको बात करनी चाहिए थी, या तो आप बात नहीं करते, बात करके फिर उनको कि 1994 में क्या वाजपेयी जी ने पीवी नरसिम्हा राव को ये कहा था कि पहले मैं अपनी पार्टी से पूछ लेता हूं? अब आप बात आ गई, उसी बात पे मैं आ रहा था। अभी राहुल गांधी का प्रश्न करण जी ने बात करी। राहुल गांधी आप पहले सवाल का जवाब तो दीजिए। आप एलओपी आपने पहले, एक मिनट वरुण पुरोहित जी, आपने पहले बोला कि किरण रिजिजू जी को पूछ लेना चाहिए था। फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि 1994 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा गया था, क्या उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पार्टी से पूछ के बताता हूं? क्या उन्होंने देश को पहले नहीं रखा? अटल जी को जब बनाया गया था, जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा गया था कि आप अपने नाम भेजिए, एज एन एलओपी उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप डेलीगेशन के लेके जाइए। ऐसे आप राहुल गांधी के साथ भी कर सकते थे। आप पार्टी को कह रहे हो नाम भेजो, फिर आप दूसरा नाम डाल रहे हो, हमको पसंद नहीं आया आपके नाम। ये जो एटीट्यूड है वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मोदी काल के एटीट्यूड की। तहसीन भाई से मैंने झगड़ा नहीं किया, उनका जो 0.50% जो मैं हमेशा उठाता रहा हूं, आज से नहीं 20 साल से उठाता रहा हूं, जब आपकी डिबेट्स भी नहीं होती थी, ये जो राज्यसभा टिकटें दी जाती हैं 3-3, 4-4 बार जमानत जब्तियों को, उसका प्रश्न भी मैंने आपके साथ कई बार उठाया है।
तो वो जो कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं वो है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है। और मैंने तो राहुल गांधी के लिए भी कहा, जो करण भाई समझ नहीं पाए कि पैटर्नाइज कौन कर रहा है। आपको तो मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये पसंद आ रहे हैं, वर्कर क्यों नहीं पसंद आ रहा? भाई मैं जानता हूं आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को, 3 पीढ़ी हो गई मुझे देखते देखते। मैं खुद एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में रहा हूं। टिकट ही नहीं देते कांग्रेस वर्कर को, टिकट नहीं दे, आएगा कैसे आगे? आप उन्हीं को 4 बार, आप कह रहे हो 4 बार एलओपी सांसद हो गए। अरे दूसरे को टिकट ही नहीं दोगे, कैसे सांसद होएगा वो? इन्हीं को दिए जाओगे, इन्हीं के बेटे बेटियों को दिए जाओगे। ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में आ रही है। और फिर आप इनको पैटर्नाइज करते हो कि आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करो, फिर ये बीजेपी में जाएंगे। आज संजू जी क्या बोली, मुझे बोलना पड़ रहा है। भाई 10 साल में तो नहीं बोलना पड़ा। शशि थरूर जब तो आपको ब्रिलियंट नजर नहीं आया, जब बिच्छू बोला आपको, मोदी जी को जब नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आज केरला का चुनाव है और वो कांग्रेस से अपने आप को अलग दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको शशि थरूर पसंद आ रहा है, कल चिदम्बरम भी पसंद आने लग जाएंगे। पर चिदम्बरम हुई चिदम्बरम, राजीव गांधी को छोड़ के जाने वाले चिदम्बरम पार्टी बना ली थी अपनी तमिलनाडु में, और आज उनके बेटे को भी टिकट, do you think there is some problem as far as the functioning of the party right now is concerned? Maybe Congress party can consider replacing their current advisors, because if this diplomatic outreach, the way government is planning it, is successful, and we want it to be successful, and then if we will have Shashi Tharoor representing the country in the United States of America, when he comes back with his delegation, it will be also seen as that a Congress MP took India's message to the world, to the United States of America. Don't you think that's also an opportunity that Congress party is not able to see right now because of its internal rift, probably? So, Hina, I'll divide this question into 2 parts. Number one, our great nation is ahead of Pakistan by decades in military strength, economic strength, cyber strength. But one place where Pakistan is ahead of India is misinformation, the kind of misinformation campaign they put out. And therefore, I'm very happy that the government of India decided to take this proverbial bull by the horns and send all party delegations across to put across India's point of view. Remember, we are the victims. And remember, we are doing the world a favor by eradicating terror in Pakistan. If we don't eradicate this terror terror will tomorrow go to the West. It's important this be articulated. And therefore, I leave it to the viewers of Times Now to think, who would be a better representative of India? Would it be somebody like Dr. Tharoor? Or would it be somebody else? Somebody who's perhaps whose only reason to go into the Rajya Sabha may have been reasons that he comes from for other reasons, not completely political. And therefore, I lead into the question that you asked. That should this also, if you look at the political party, think of political decisions? Well, a political party must think about what the mood of the nation is. And the mood of the nation, Hina, today I'm in Mumbai. Everyone are talking about what Dr. Tharoor's done, what Barkha did. She's, of course, now an independent journalist, what everybody else. They've seen my podcast. People are today happy that the opposition and the government are one. We need to take this momentum forward. If we break up this momentum, it's not in our interest. So why aren't we judging the mood of the nation? The mood also wants these people. So I think it is important that we look at the mood of the nation. Though I must add one last caveat. When Prime Minister Narasimha Rao sent late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, then opposition leader, he also sent Salman Khurshid to along with him. And both of them won the case for India. And I'm grateful that the current Prime Minister is also sending Salman Khurshid. So I believe Salman Khurshid Saab is also going. He's also going to one of the nations. Yeah. I did mention that in my introduction, by the way, when I was talking about it. And Sanju Verma, it would have actually been a feather in Congress party's cap. But look what the Congress party is busy doing. You know, Hina, first and foremost, with no offense to none, let me tell you, I have also been interacting with people across the age divide, across generations. I have been interacting with so many bona fide citizens, और हर कोई एक स्वर में एक ही चीज बार बार दोहरा रहा है. It's so proud to be an Indian today. It's so proud to have somebody like a Narendra Modi at the helm of affairs. पाकिस्तान को सच में मिट्टी में मिला दिया. Imagine in less than 23 hours, a nuclear power like Pakistan, its 11 air defense systems were paralyzed, its military assets completely exposed, its nuclear bluff called out fair and square, and its combat readiness completely demolished. I mean, hats off to Prime Minister Narendra Modi. मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सच है. पर मैं कांग्रेस के लिए कुछ कहना चाहूंगी. एक चीज तो आई एग्री विद वरुण पुरोहित, कांग्रेस में जो जमानत जब्त
हो चुकी है लोगों की, उनको राज्यसभा में भरपाई हो रही है। इसलिए कहती हूं, आई डोंट इवन नो हिना वेदर जयराम रमेश हैज एवर कॉन्टेस्टेड अ लोकसभा इलेक्शन, बट जयराम रमेश जैसे लोग और तपस्वी खेरा जो कि आंख गड़ाए बैठे हैं कि कब राज्यसभा में मेरी दाखिली होगी, ऐसे लोगों को कांग्रेस से दूर रखना चाहिए। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड